Our today's class is for 11th class. As you know, our subject is geology. We are discussing geological work of underground water. हम इसको कंटिन्यू करेंगे. हमने इससे पहले वाले क्लासों में जियोलॉजिकल वर्क में एरोजन और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा है. इस क्लास में आज हम डिपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे. सो अंडरग्राउंड वाटर की वजह से जो एरोजन हो जाता है, मटेरियल जो एरोड हो जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है. आगे बढ़कर ये मटेरियल डिफरेंट चेंजेस के होने की वजह से फिर डिपॉजिट हो जाता है. एज यू नो, this deposition depends upon several factors such as evaporation of water, loss of carbon dioxide, fall of pressure, decrease of temperature, and the chemical reactions which takes place during erosion and transportation. Finally, deposition take place. Groundwater. This groundwater carries dissolved minerals, as we have already discussed, which these dissolved materials which are in solution, which may be deposited in the form of stalactites, stalagmites, tufa, travertine, and geol. So what are the stalactites? Basically, these stalactites is a cylindrical shaped deposit of calcium carbonate which is hanging from the roof. Stalactite is a material of calcium carbonate or deposit of calcium carbonate, cylindrical in shape, hanging from the roof. If this is a roof of a mountain or a cave, when the water percolates into it through the cracks, crevasses, openings, the calcium carbonate material, after getting different changes like evaporation of water, loss of coral, or fall of pressure of water, or the change in temperature, finally this calcium carbonate materials changes into the shape of a cylinder, and these structures are formed under the roofs of a cave. Similarly, stalagmites, these are column shaped deposits on the base or on the floor of a cave. Simply, this hole is a cave. The water which enters through the cracks, and after a long time this water drops, but this water is a solution of calcium carbonate mixture. After continuing drop, these droplets of calcium carbonate solution forms a block-like structure or column-type structure from the floor of a cave. That is known as stalagmites. Similarly, tufa. These are porous limy structures or deposits. Those deposits which have pores, as the due to loss of carbon dioxide or evaporation of water from these pores, with the result limy deposit, or we can porous limy mass deposit, which is known as tuff. Similarly, travertine is also a limy spring deposit which is in the leaf shape on the banks of this stream
which is flowing from a spring. Geode is also more or less spherical cavity. It is a spherical cavity of rocks which is impregnated by silica and calcareous material. So if you try to understand what is deposition, as you know, जैसे इसके बारे में आप पहले ही जानते हैं, डिपोजिशन मुख्तलिफ फैक्टर्स जैसे मैंने आपको बताया, जब किसी मटीरियल में इवापोरेशन ऑफ वाटर हो जाता है, मीन इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे वो खुश्क हो जाता है, या इससे गैसेस स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है इस मटीरियल से, या कभी फॉल ऑफ पानी का जो प्रेशर रहता है वो जब कम हो जाता है तो ये मटीरियल आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होने लगता है। इसी तरह से डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर की कमी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये जो मटेरियल होता है ये डिपॉजिट होने लगता है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे या केमिकल रिएक्शंस का इसमें अहम रोल रहता है, जिसमें हम सिंथेसिस या डिकम्पोजिशन, रिप्लेसमेंट की बात करेंगे, सिंगल डिपॉजिट या मल्टी, बहुत सारे मटेरियल्स जो होते हैं उनका जो उनको जब केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिपॉजिट हो जाते हैं। ग्राउंड वाटर ये जो हमारा होता है ये कैरी करता है डिसॉल्व्ड मिनरल, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, जब ये कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है डिसॉल्व्ड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस, और वो सस्पेंडेड मटेरियल जो होता है जो पानी के साथ चलता है, हल्के फुल्के पार्टिकल्स जो होते हैं, मिनरल पार्टिकल्स या मटेरियल्स होते हैं, अर्थ मटेरियल, वो जब ट्रांसपोर्ट हो जाता है फिर इन डिफरेंट चेंजेस में जब वो गुजर जाती है, या इन जो मुख्तलिफ तब्दीलियाँ जो उसको हो जाती है उनकी वजह से वो किसी जगह पे आहिस्ता से डिपॉजिट हो जाते हैं। और उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स है स्टेलिग्माइटस, स्टेलिक्टाइटस, ट्रेवेंटाइन, जियोड, इनकी एग्जाम्पल्स जब हम बता रहे हैं आपको, तो इनमें हम स्टेलिक्टाइट्स क्या चीजें होती है, अगर किसी केव के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट ऊपर से नीचे टपकने की कोशिश करता है, फिर या साइड्स में इसको पानी चला जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो दाएं बाएं मटेरियल या तो ये नीचे गिर जाता है, और वो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट का मटेरियल जो रूफ जो होता है, केव का जो छत होता है, छत से ये नीचे जैसे लटक जाता है, हैंग हो जाता है ये मटेरियल कैल्शियम कार्बोनेट, और ये सिलेंड्रिकल शेप में ऊपर से नीचे हैंगिंग रहता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट मटेरियल का एक बॉल जैसा सिलेंडर शेप्ड डिपॉजिट होता है। इसी तरह से ये हो गया स्टेलेक्टाइट। अगर हम स्टेलिग्माइट की बात करेंगे, कभी कभी केव के ऊपर से कैल्शियम कार्बोनेट टपकता रहता है, फिर जब नीचे गिर जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका ढेर, जिस तरह आपने देखा होगा सीमेंटिंग मटेरियल जो लाइम का होता है, ऊपर से जब गिर जाता है नीचे उसका छोटा सा ढेर जैसा बन जाता है, इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट का मटेरियल ऊपर टपकने से आहिस्ता आहिस्ता एक स्ट्रक्चर, कॉलम शेप्ड स्ट्रक्चर कैल्शियम कार्बोनेट का केव के अंदर, जिस सुराख से ये कैल्शियम कार्बोनेट गिर जाता है उसी के नीचे से स्टार्ट हो जाता है। इसमें लॉन्ग टाइम, इट इज अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस, और इसकी वजह से कॉलम शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, डिपॉजिट बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में का, जिसको हम स्टेलिग्माइट, ये केव के अंदर बन जाता है। इसी तरह से टूफ, ये एक पोरस लाइमी डिपॉजिट होता है, इसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे, इसमें अगर हम ऊपर से पानी डालें, ये होल्डिंग कैपेसिटी वाला रॉक बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर पोर्स होते हैं लाइम मटेरियल का। ट्रेवर्टाइन भी एक कैल्शियम कार्बोनेट मटेरियल टाइप होता है, लेकिन ये कहाँ कहाँ पे हमें ज़्यादातर मिल जाता है, हम कहाँ इसको फाउंड करते हैं, इर्द गिर्द जब स्प्रिंग्स जहां से निकलते हैं, स्पेशली लाइमी स्प्रिंग, कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल्स जिन स्प्रिंग्स के अंदर दाएं बाएं रॉक्स अवेलेबल होते हैं, उनसे जब स्प्रिंग्स निकलते हैं तो अराउंड द स्प्रिंग्स एक डिपॉजिट लीफ इंप्रेशन जैसा बन जाता है, उसको हम ट्रेवेंटाइन कहते हैं। इसी तरह से ज्वार्ड, ये कम कलीलन तकरीबन स्फेरिकल केविटी होती है इसमें रॉक्स में, क्योंकि इसमें इम्प्रेग्नेट होता है सिलिका या कैल्केरियस मटेरियल। सो दिस वाज रिगार्डिंग द डिपोजिशन
ऑफ जियोलॉजिकल वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, या इस तरह से हम कहेंगे कि अंडरग्राउंड वाटर की जो एरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन वर्क्स थे, इनमें से आज हमने डिपोजिशन का हिस्सा कंप्लीट किया है। इस डिपोजिशन में इन चेंजेस डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है डिपोजिशन। इन फैक्टर्स की वजह से डिपोजिशन हो जाता है, और उनकी एग्जाम्पल्स जैसे स्टेलिगमाइट्स, स्टेलिगटाइट्स, ट्रेवर्टाइल और जियोड की शक्ल में हम डिपॉजिट्स देखते हैं। ये डिपॉजिट सभी जियोलॉजिकल वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर की वजह से है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज क्लास।